Dr. Raja Chava, working as a plant pathology, US ICEP Precision Center, US Raichur. Yes. Good morning, and Dr. Dinesh is working as a scientist at the Ramnagar, Karnataka. Good morning, sir. Myself, Dr. Siddhartha, PhD Assistant Professor in Department of Spice and Plantation, College of Horticulture, and the PU of Future Scholar. Good morning, sir. Myself, Dr. Mohan Kumar, working as scientist horticulture, KVK Chamarajanagar, and US. Good morning, sir. Myself, Dr. Shashikar Reyes, working as assistant professor in Department of Agriculture and Economics, College of Agriculture, Assam, and US. I'm Mingal Malika, working as horticulture scientist at KVK, either in US. Because there is from extension also. Very good morning. Myself, Dr. R. Girish, working as scientist plant protection in ICAR Shumaka. Though they are not in extension, but all are doing extension also. So that myself, Dr. entomologist, agri for grower, University of Agricultural Sciences, Bangalore. My name is Dr. Kumar Nayak, PH. I am agronomist, ASI grower, working in Hiriyur, coming under UHS. Myself, Dr. J.K. Raymond, working as scientist crop production in that center of Mathura, which is under the PGTS. And my wife also company, madam is also company to see your activities. Special introduction to Thank you all. Our colleague, Mr. Vishwanath Salu, the program assistant, lab technician. Actually, we have no soil testing lab. Okay. Due to availability of industries, assisting. Now I request Dr. Ravindra Singh sir to welcome Dr. G.K. English sir, offering for. Again, I request Dr. Ravindra Singh to welcome Dr. H.K. Virana. So, I request all my colleagues, all the scientists. Minor, yes, please go on. Other scientists are caring to please welcome all participants. I think it's a very integrated batch. Yes, sir. Agronomy, horticulture, plant protection, economics, one from economics and one from extension, but nobody from home science, I think. But overall it's a very integrated batch. First of all, I thanks to Dr. Shah, coordinator and co-coordinator, because they choose the Sri Siddhigiri Mutt along with the Sri Siddhigiri Krishi Vigyan Kendra at Kolhapur. So welcome to again. Our KVK just it's not a old, just KVK was sanctioned in March 2018.
and working from January 2019 with 50% of staff, and rest staff joined in November 2019. So overall, just we will complete 5 years in January, just we can say. So all we know about the KVK, what mandate KVK have, and other functions KVKs are doing. So at present 732 KVKs in India, all we know. And some from ICR KVKs, SUs KVKs, NGOs KVKs, some from State Agriculture Department KVK. So we are from NGO KVK. About 104 KVKs come under NGO. So all activities, whatever KVK is doing, but apart from that, our KVK, what is doing? Due to Puja Swamiji, Swamiji 49 Pathathapati of this Holy Institute. So Swamiji as a Sant, everyone knows Sant for the society Margdarshak, we can say. Apart from them, Swamiji's heart only rural people, desi cow, and natural farming, education, how we can contribute for the society development, how we can enhance the livelihood of the farmers. So many things Swamiji is doing. From that, our KVK just for focusing on natural farming. Just we didn't use any particle of chemical under pesticide and chemical fertilizer. Our soil 2.6 OC organic carbon. Because due to heavy rainfall, Kolhapur have 2000 mm rainfall. So some 0.2 to 4 can be fluctuate. So forever our organic carbon is above 2. So due to Goshala, we are maintaining that. Just we have a Goshala means Host Institute. Above 1000 desi cows is here. I think 54, 55 breeds found in India. Out of 54, just we have 23. Some are very rare breeds, just we will see after this session. So due to Goshala, just we are doing that. Because these programs come under natural farming, organic farming. After coming this government, just they are focusing on natural farming. Out of 732 KVKs, they select 420 KVKs for the natural farming project. In Gujarat and Himachal, all KVKs, and rest India, some selected KVK. We are one from them under natural farming project. So overall, government of India is focusing natural farming. Just you will see in 1950, our 131 million hectare land under net sown area. 100% was under natural farming. But if we see in 2021, total net sown area was 140 million hectare. But under natural farming, only 2%. Only 2%. After, if we see 2%, just 90% just we are exporting to the other countries. Only 10% we are consuming. So due to excess use of chemical fertilizer and pesticide, just our 140 crore population, just we are seeing so many hospitals and so many diseases come. Because I came from Rajasthan. One train come from Punjab for the Bikaner, weekly train. So that's name is cancer train. That name is cancer train. Because in first phase 1966, 67, just green revolution started from Haryana, western part of UP, Punjab, and some part of Rajasthan. But you see in existing scenario of that soil and farmers. So overall government is focusing natural farming due to that results. Now our scientists are also focusing. I think we have an arc for you, all of you, because all are majority of agronomists. Majority of agronomists. Just how we can contribute maximum for the farming community under natural farming or organic farming.
Somebody are saying natural farming is a myth or reality. Just we can say, on behalf of KVK, on behalf of my team, on behalf of our trials at KVK Farm and as well as Farmers Field. Just you see our fodder crop. UP Gosala, just we have a maximum area covered under fodder crop. Napier grass, multiple napier grass. Without any chemical fertilizer, just you will see. Just we are taking in 1 gunta means 1000 square meter. 1 ton, and it means 1 acre, 40 ton we are taking in 1 cutting. Just we are taking 4 cutting in a year. Means 120 ton in a 1 acre land. If we find cost about 3000 per ton, just we can calculate to achieve. Some scientists and some farmers said no, organic farming is not possible. But we can say, but it's required to validate the technology. In last 5 to 6 years, 7, 8 years, whatever, I think very real research papers and technology come under natural farming. Selected research papers come under natural farming. Selected. So I think it's time required to research for natural farming, so that we can convince the farmers, we can convince the government, we can convince our scientific community also. So our KVK within 5 years just maximum trying to replicate the technology, not costly or type technology, Jivamrat, Bijamrat, Ghanjivamrat, 10 Pandiya, etc. Just we have all, just you see at our farm. So again, I thanks to coordinator and co-coordinator. You came and you stay, and I hope we try to best hospitality for you due to ये जो हाँ सर बस ये जो घर के हमारे लोग जो है सर, ये जो हमारे घर वाले लोग हैं उनके लिए जो यह से आटा मिलेगा वो हमारा मतलब 20 to 30 RPM का आटा रहेगा। वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। हम एक्चुअली आटा चक्की से लेके आते, वो एकदम गर्म हो जाता है तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट जल जाते हैं। इसमें वैसा नहीं है। एक तो हमें अच्छा आटा मिलेगा और दूसरी बात ये है कि हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है घर में ही, और हमें अच्छा क्वालिटी का आटा मिल जाता है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये सर मतलब इंडिया में सबसे पहली बार बैल चलित रोटावेटर है। बैल चलित मतलब हम आदमी के गति से ज़्यादा बैल की गति रहता है, और इसका यहाँ से यहाँ मतलब ज़मीन पे चलता है, ये यहाँ पे आ जाता है। इतने डिस्टेंस पे इसका पीछे वाला जो रोटावेटर के टीथ है उसका एक रोटेशन हो जाता है। मतलब ये एक बार घूमता है तो वो 30 बार घूमेगा। तो बुलक का स्पीड हमसे ज़्यादा रहता है आदमी से, तो वो ऑटोमेटिक मतलब ट्रैक्टर जैसा चलते रहता है वो। फिर उधर वाला बुलक ड्रॉन ट्रैक्टर है, उसे पीछे मतलब जो चाहिए वो इम्प्लीमेंट हम इंस्टॉल कर सकते हैं। कल्टीवेटर है, मतलब सीड ड्रिल है, फर्टिलाइजर है, सब कुछ हम वहाँ पे जोड़ सकते हैं। फार्मर यूज कर रहे हैं सर सिर्फ डेमो के लिए? नहीं अभी उसका हम डेमो चल रहा है। नहीं दिया ना अभी नहीं किया है शुरू। आ गया है हो आप लेकर डेवलप के लिए आ जाए। फिर ये जो हमारा है जैगरी प्लांट है, थोड़ा सा मतलब हम बोल सकते हैं इसे मॉडर्न जैगरी यूनिट है। उसमें हमने क्या किया है, एक तरफ से हम गन्ना क्रश करते हैं तो डायरेक्टली जूस जो है ऊपर से एक पाइप देख रहे हैं वो फर्स्ट पैन में आ जाएगा, और जो बगैस है वो बगैस नीचे नहीं गिरता है। वहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट है, वो बेल्ट से आके इस हॉपर में आ जाता है। ऊपर वाले हॉपर से ये 30 फीट का हमारा ड्रायर है, तो हॉपर से ड्रायर में गिर जाएगा, और 20 मिनट के अंदर वहाँ का मतलब मॉइस्चराइज्ड रहता है ना हमारा बगैस, वो उधर डाल देते हैं
फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 20 मिनट लगता है, 20 मिनट में पूरा ड्राई होके इस कन्वेयर बेल्ट पे आ जाएगा। और ये बेल्ट ऑटोमेटिक घूमते रहता है, तो ये बेल्ट से इस हॉपर में और डायरेक्टली ऑटोमेटिक मतलब ये पैन को आग लग जाएगी। और इस पैन की जो हीट रहता है, इस पैन की बस एक ही इस पैन को हम हीट देते हैं, वही हीट 2 नंबर के लिए इस पैन को रहती, 3 नंबर के पैन के लिए रहती, और वही हीट हम ये जो ड्रायर को यूज़ करते हैं, जो बगैर ड्राई करने के लिए जो हीट यूज़ करते वो इसी के नीचे वाली जो हीट रहती उसी को रिसाइकल करते हम चलाते हैं उसी का। मतलब यहाँ पे 50% हमारा जागरी तैयार हो जाता है, यहाँ पे 30% और ऊपर वाले में 20%, और ज़्यादा जो एनर्जी रहता है एक्स्ट्रा एनर्जी ये ड्रायर के लिए कंज्यूम हो जाता है। यह हमारा IFS मॉडल है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो इसमें हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, कैश क्रॉप है, सीरियल है, पल्सेस है, वहाँ पे फिर गोट्री है, पोल्ट्री है, फिर फर्मी कंपोस्टिंग का है, डेयरी वाला यूनिट है, बायोगैस है, सोलर सिस्टम है, मशरूम है, फार्म पॉन्ड है, मतलब इंटीग्रेटेड वाला सब दिखा है। ये जो इरिगेशन का है, ड्रिप इरिगेशन, उसके कंपोनेंट दिखाए दिए। हमारा ये लखपति खेती का आता है, लखपति खेती का ये जो है मॉडल, उसी में हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है कि कोल्हापुर में लगभग जो हमारा एवरेज देखा जाए तो 1 एकड़ का एवरेज लैंड होल्डिंग है, तो कोल्हापुर के फार्मर के लिए बनाया हुआ है। तो 1 एकड़ में उस फार्मर का खेत रहेगा, फिर गाय का गोटा रहेगा, उसके साथ बायोगैस सोलर यूनिट रहेगा, और जितने सारे चीज़ उनको खाने के लिए लगती है पूरे इसी में रहेंगे। और उसके अलावा मतलब टोटल सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, फिर जागरे मतलब जागरे के लिए गन्ना है, मतलब पूरा तीनों भी सीज़न में इसी में टोटल क्रॉप, एक सीज़न में हमें कम से कम 100 क्रॉप यहाँ पे दिखाई देंगे। और हाँ 100 क्रॉप कंटिन्यूस रहेगा। जो हमें ले लगेगा वो तो प्रेफर करते हम, जो बचा हुआ रहता है वो मार्केट में बेच के हर सालाना 1 लाख रुपए का हम इनकम बनाते हैं उसी में। फिर हमारे कोल्हापुर का मेजर क्रॉप है गन्ना, एक 2.5 लाख हेक्टेयर तक गन्ना है, उसी में हम इंटर क्रॉप कर सकते हैं। उसमें सोयाबीन है, ओनियन है, ग्राम है, ग्राउंडनट है, और अलग अलग प्रकार का वेजिटेबल्स है। ये थोड़ा सा दिखा दिया। यहाँ से फिर हमारा सेरिकल्चर का पार्ट आता है। पराग सर। Yes, sir. This is our plant protection unit, sir. Start from beekeeping. So bees are very important to do pollinate crops. So we are also focusing on beekeeping, especially this. Okay. So it's plant protection unit. It includes the beekeeping, sericulture. The first beekeeping, bees are the importance for the crop pollination, and we are specially focusing to the Serena indica, Apis serena indica. It is an indigenous bee which can help for the pollination as well as the honey and pollen yield, honey yield and wax yields. Second is the sericulture unit. Some pockets of Kolhapur district sericulture also are done by some farmers, because in Kolhapur land holding capacity is very less. So for the sericulture at least 1 acre land required. So very few farmers, some pockets of some villages, they do the sericulture here. These are the needs of some different traps for the crops and leaves we use here. Some microbial pesticides and trichocards we just here. We are planning to put here the insect specimens here, but because of some glass that we are not here. Second, this is a model of integrated pest management. So whatever the activities or the components we use in integrated pest management, we are using here. So we try to use of the multiple cropping system, trap crops, repellent crops, and some traps and funnel traps and lure traps like that. Some traditional methods, swing methods. In our region, sugarcane is a major crops, and white grub is a dominant pest in sugarcane. So it is an integrated management of sugarcane. So it is a model of how the white grub start its life cycle from June to and the end of the May. So the whole 3 stages are in the soil, so they are mentioned here. Integrated approach means that plowing during this
summer and collection of white grubs, beetles from the burnt trees and like that. So, and using application of the microbial insecticide like drenching is there at the root zone. So it is possible to maintain the infestation of white grub. This is a model of mushroom, oyster mushroom. This is a small model. Then this is a model of the beneficial insects because we actually our farming 100 means 90% rely on these insects. Predators, sir. Yes, sir. So we have developed that ecosystem already because I told you our institute is doing organic farming. So ecosystem is very favorable for the to maintain the pest level below BTL, sir. So that's why we know the farmer should know what are the beneficial insects. So this is the different units of animals. These units are already you can see there. This one hydroponics, azola. This is a boiler unit. So extraction of the cow urine and other oils we have already here, sir. Three types that goating and poultry and fishery. That's the units we know that is a stall feeding. Yes. Different types of heap. Heap, ಮಾಡಿದಾಗ yes, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮುರಿದು ಕೊಟ್ಟರೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಂದೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ So head-to-head cow units are head-to-head system. Then a loose housing system. ಯಾವ ಜಾಗ Yes. Gobar gas and bioenergy production unit. This is a fruits and vegetable processing unit, post-harvest management. Ma'am. Okay. We will. Okay. इसको प्रेस करो मैडम, ऊपर है ना इसको बटन यहाँ पे Okay. कॉर्नर से Oh. Okay. Good morning, all of you. Yes, this is the food processing unit, and we have show here farm to outlet products like and this is also another model, kitchen gardening, which is nearest to home, and we can plan this near about 700 square feet to 100 square feet, and we have planned here each and every fruits and vegetable which is required to our home. And this is our Siddhagiri nutrition garden, and in that garden we can plant just vegetables only. In that fruits, vegetables, roots and tuber and leafy vegetable also we can plant. And this is our special model, terrace garden. Yes. And here also we can produce vegetables and that we can say lata vargya vegetables also. And most successful is leafy vegetable on that model. Yes. Anybody can plan according to their area. Yes. And we can use waste material like bottles, cap. Yes. The kitchen waste also, and our utensil of our house, any utensil. Yes. Like half of bottles. Just you can see here. Bottles, cap, and drums, whatever we have, we can arrange here. Yes. Okay. Thank you. Yes. And जब ये फर्स्ट टाइम हिट किया था मतलब इस प्लस में, तो उसको हम ऊपर नंदिनी वो निकिता है वहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल मीटिंग करते हैं और इसके हमारे पास यहाँ पे 22 ब्रीडिंग पूल्स है, वो ब्रीड से हम उनको नेचुरल मीटिंग करते हैं। और यहाँ पे पूरे लगभग देखा जाए तो 30 पीपल्स आर वर्किंग हियर इन एवरी एंड वी आर यूजिंग बुलेट 4G सुपर नेपियर एज अ ग्रीन पाउडर, and in dry powder we are using
जो वाला इसमें क्या करते हैं सर, हम अभी हमारे पास गिर ग्रिल्स है यहाँ पे, गिर ग्रिल्स है, तो उसका जो मीटिंग हम करेंगे वो गिर के, हाँ, तो वो 22 ग्रिल्स हमारे पास है, तो उसका प्योरिटी वहाँ पे मेंटेन करेंगे। आज तो उधर है और यहाँ पे जैसे कि स्वामी जी के आशीर्वाद से हम अभी पिछले 1 वीक बैक हमने एम्ब्रो ट्रांसफर यूनिट का भी यहाँ पे इनॉग्रेशन किया। मशीन्स वगैरह उनका आना बाकी है, उसका सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह सब ठीक हो गया। एम्ब्रो ट्रांसफर में क्या करते हैं कि जो हाई एल्डर मिल्क देने वाले जो काउ, उसका हम क्या करते हैं, एक मतलब 2 साइड निकल के जो बुल है जिसका पेडिग्री मेंटेन है, जिसके मान्य और उसके आने जो डॉक्टर्स है उसका जो मिल्क रिकॉर्ड है वो देखते हैं, तो लगभग 4000 लीटर्स के अबाव 4000 लीटर्स पर लैक्टेशन मतलब 305 डेज में 365 डेज में हम क्या करते हैं, 60 डेज होता है वो ड्राई पीरियड है, वो ड्राई प्रेगनेंसी में हम 100 kg के लिए लगभग 12 kg ड्राई मैटर लगता है, तो वो ड्राई पाउडर और हम एनिमल फीड से उसको और देते हैं। और जो हमारा ड्राई एनिमल्स है वो ग्रेजिंग के लिए, और इनको अभी लूज हाउसिंग हम प्रेफरली सबसे ज़्यादा लूज हाउसिंग में ही करते हैं, क्योंकि लूज हाउसिंग में डिसीज जैसे वो बाकी बीमारी है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो मास्टाइटिस है जो गुट की बीमारी है वो सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। सेपरेट चेंबर वगैरह रंग और यूरिन कलेक्शन के लिए सेपरेट चेंबर वगैरह है। यूरिन कलेक्शन में क्या करते हैं सर, सुबह 4 बजे हमारे जो वर्कर्स हैं, जो ऊपर वाला हमारा जो नंदिनी गोली है वहाँ पे वो सब सुबह 4 बजे खड़े होते हैं, स्टील का जो कलेक्ट करके हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन काउ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, वही सर कलेक्ट क्या हुआ पूरा एक ही कलेक्ट करता है क्या, अलग अलग कलेक्ट करते हैं सेपरेट यूरिन पूरे। मिल्किंग भी है इनका 4:30 सुबह और शाम को 4:30 फीडिंग भी यूरिन भी सुबह शाम को नहीं, यूरिन एक ही बार, और सुबह का जो यूरिन होता है वो What will you for what purpose you are doing? हम वो जो का यूरिन है उसका डिस्टिलेट जो है अर्क उससे जो ह्यूमन में डायबिटीज़, हाई BP लो, उसका हम क्या करते हैं, जो पुनर्नवा सप्तरंगी वो जो ये है औषधि वनस्पति है उसका अर्क है वो उसमें यूज़ करके हम मॉल में हमारे यहाँ पे ನಮಗಷ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಕರ ಗಿರ್ರಿ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. You take that label and मसाला बघतोय पण त्याला ते बघता येत नाही. आज जा नको एवढ्याला काय पूर्ण त्याच्यात पाण्यासाठी रे. हो पण ते हे करून पाणी बघ ना किती किती पिणार ते
ఆస్ట్రేలియాలో వాళ్ళు ట్రైబ్స్ దగ్గర నుంచే ఉంటాయి. मतलब जितना भी सारा फील्ड है उसी के ऊपर स्टैंडिंग क्रॉप यही है हमारा अभी दिखाने के। ओनली टर्मरिक। हाँ, ओनली टर्मरिक। अभी जो यूट्यूब पे वीडियो देखा तो वैसा ही एक हम 2 एकड़ पे डेमो बना रहे हैं। उसी में लगभग हमारे 100 क्रॉप रहेंगे, 100 क्रॉप रहेंगे अलग अलग से। उसका अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो टर्मरिक देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक और सेलम वैरायटी का है। आपका क्वेश्चन रहेगा इसमें मल्चिंग है। You ask a question about mulching. Yes, sir. ऑर्गेनिक में mulching. हाँ, but we used in organic farming we actually used mulching, plastic mulching. We have used in organic farming, not in natural farming. Okay. We also used drip irrigation, plastic mulching. We also actually used. Even though in natural farming we are not using microbial insecticides. Yeah, madam. Curcumin content Totally rely on the botanicals Yes, sir. and variety curcumin content. Selam variety ना sir? हाँ, 5 to 6%. Our one farmer from Sangli district, there is a indigenous variety. This variety contain approximately 17 to 20% curcumin. Yes, sir. That much, huh? Yeah, sir. Actually, more than 6. No, sir. It's not possible to get the यस सर मेरे पास कांटेक्ट नंबर है उसका। मैं आपको कांटेक्ट, वो उनका दावा है कि मेरे इसमें 30% तक है। लेकिन हाँ कुरकुमिन, लेकिन 5 to 6%. नहीं वो फार्मर के पास रिपोर्ट है वो 17
to 20% का रिपोर्ट है, लेकिन वो बोल रहा है मेरे इसमें कुरकुमिन जाएगा। सेम वेराइटी? नहीं, ये तो सेलम है सर, उसका इंडिजिनस वैरायटी। इंडिजिनस up to 30% also. हाँ, Please give me number. yeah. This farmer from Sangli district. Yes. 30%. Pharmaceutical industry definitely very happy if you can get a proposing प्लांटिंग सर लेट प्लांटिंग है, एक जून 15 फाइनेंस शॉर्टेज cross talk. So you just listen to what he is explaining. After explaining, you can ask questions. Somebody, you are talking yourself, please, nobody can understand nothing. Only two people will interact with him. Otherwise, it will, the video is also being recorded. Please maintain silence for 7 minutes. After that, you can ask your question. अपन normally we plant turmeric in April month, last to April, and then after May month. But we are late. We sowing this turmeric in 15 June. 15 June. September, October, November. 6 months crop. When you stop general IT के इधर you have to plant पाणी सर लास्ट स्टेजला आपण थांबवतो महिना, हा एक 15-20 दिवस थांबवतो शेवटी आता पाणी चालू आहे ना, हा पाण्याचं थोडं शॉर्टेज आहे सध्या पण. Hello sir, just you tell me from one plant how much the turmeric yield you will get, 1 acre how much you will get from this land under organic farming, then what is the quality. So regarding that few points you can answer now. First time we have planted. So now any horticulturist who is experienced give his comments on the crop by looking at it, what is its yield. Any horticulturist per plant how much we can get, 2.5 kg rhizomes and 2.5 and per acre. 2 kg on approximate one rhizome from one rhizome. Zigzag ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ mostly 20,000 plants are there in 1 acre. Yes sir, yes. 20,000 2 kg. 40,000. 40,000 means 40 kg. 1 ton. Even they What manures you have given? Manures? म्हणजे सर हे ऑर्गॅनिक मॅटर्स नाही आता 12 जानेवारी आमचं टार्गेट. Actually we got from him at multiply 1 liter that culture that we include all the ingredients that water, buttermilk and it's a mother culture and organic jaggery. So this quantity for the 200 liters, 1 liter that culture and 2 kg jaggery and 1 to 2 liters buttermilk from Deshi cow. So the bacteria will multiply automatically in 7 days. So that culture we directly use for the drenching and spraying and like. No dilution. Yeah, dilution needed. Dilution. Yes. So separate that. That culture, Gopal Sutaria is from Gujarat. Now, but one time we will take. There is no need to take again. You can multiply. Sir, what is this mother culture? So mother culture means if you have to do just like a curd you prepared from the milk, na? So you just use a mother culture. Don't know what are the bioagents or microorganisms in that culture? He given the list we saw there means already some rhizobium as there, PSB is also there. Some. So he supplies at a cost. He is not supplying for cost. Yes, fodder crop is there. Yes, sir. Yeah.
Sell that our different 150 farmers are also included in that company. This produce company purchase the produce at the rate of 40 rupees per kg, and they are providing to the home delivery at Kolhapur at 60 rupees per kg. This is a fixed rate for measure the fruits crops and roots crops. Fruity vegetable and root vegetable. Leafy vegetables they are purchasing on the basis of that pendi. Yes. One bunch. Yes, bunch. And these rates are not fluctuating as per the market. They are fixed for all farmers also and consumers also. We are here preparing some inputs for maintaining the health of plants like Jivamrut, Bilvarasayan, amino acids, fish amino acids and other Panchagavya likes. Also for plant protection we are Dashparni Ars and Nemastra. Mostly we are applying the compost vermicompost yearly one time, that is around 10 tons per acre. And other than that we are frequently around 21 days interval we are providing Jivamrut through drip irrigation, otherwise through spraying. Also we are providing some bacterial cultures like NPK consortia. One of bacterial culture we are having, that is a Gokupa Amrutam, that is a culture from Bansi Gir Goshala. We are also using that, and this is we are trying to cultivate the vegetables also. Mostly this block is continued with rainy season. In summer season and Rabi season we are taking it in open field also. Some queries are you can ask, sir. Whether you will go for foliar spray, all those things are giving to drips, sir. Drips, sir? Drips, sir. You are going to... Foliar application is there or foliar spray? No, also foggers are there, like for maintaining temperature only, not for irrigation purpose. Irrigation we are giving through drips in this plot. Nutrients, no sir. You told some applications are not. Jivamrut, that is a manual spray, sir, not for foliars. You are not giving? No sir, not as any chemicals and yes, drenching. And suppose it we like to spray, then it is manually. Yes, sir, stingless bee box. So the bee box, sir, stingless bee box. How we manage the disease and all? It can. Parag sir can explain the. How we manage disease, sir? Better alternative. Stingless bee. Stingless bee. Other bees we can't use in polyhouse. This is convenient for this 1 acre area. 1 acre area. 1 acre area it is sufficient. Stingless bee. Stingless bee. See, pollinate the small flowers. Okay, okay. Very small. Very small. Because other bees means Apis serena, they want to go outside near about 2.5 kilometers away. So this area is very small area to our pollination. And disease management we use only means soil borne diseases we use the Trichoderma pseudomonas like that. And foliar disease management in the organic farming we totally depends on the preventive measures. Whatever the incidents we know in the tomato, like early blight and late blight comes, at that time we can the cow urine has a good it has antifungal, antibacterial properties because of phenols and phenolic acid it acts as well. So preventively we use that, and curative we are unable to manage the disease. So preventive, when the disease symptoms we got, we can pluck and remove and destroy it. Foliar diseases like, and we sometimes we also observe the nematode problems. So we also Trichoderma also used as a nematicide. Neem cake, it has also the nematicidal properties. In tomato, last time we actually observed the incidence of tuta obsoleta, that is leaf minor pest on it. We managed, but at that time we lost our crop near about 50%. But now in last season crop, March, April,
that period we maintain, we manage, we properly manage that waste by using the pheromone traps and some botanicals. Now it is free from the tutor. So under your observation, keen observation is very important to manage the pest incidence. We can manage the pest below PVTL levels. So we have some crops. So what is that plant beside that gala? It's the Clementia semialta. It is a host plant of lac insect, ma'am. Lac insects. Actually, we brought from Ranchi seeds. Planted here, we are planning for the seed production. Now it will be multiplied in other locations. Vegetable. Yes, sir. Vegetative, no, sir. Actually, seed production. How you use to give spray now? Yes, sir. At Yes, what ma'am. concentration? Concentration, ma'am, actually we use the per 10 liters 75 ml, 75 to 100 ml, and one recommendation of Junagadh Agriculture University or only for the coconut, groundnut, there is a 10% cow urine spray. We already conducted trials already in our FLD or OFT trials at the time of 20 days after germination, 40 days after germination and 60 days after. 3 sprays are there to control the leaf spot disease, Cercospora. 100 ml per 10 ml only. 90 ml the water. 10 liters cow urine with 90. 10%. 1 liter cow urine, 10% means 9 liter. 100 ml per 9 liter water. 9 liter, 10%. It is recommended. Final volume. No, sir. Final volume is 1 liter. 1 liter cow urine, 9 liter water. Only for groundnuts, sir. It is not for other crops. Not for all. It is already recommendation of the Junagadh Agriculture University. याचा आयुष्य किती आहे? Okay, only for ground, not other crops. 4 months. तेवढंच आहे? नाही आत्ताच For all the crop, you have to spray the cow urine like that. जास्त किती वर्ष? 15-20. ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ 90 ml ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. 100 ml. Only groundnut leaves. Only groundnut. For other crops, We have already conducted trials, sir. In our farm, actually, 5 days before we tested that crop, we got excellent results. Yes, but it is concentration is not for other crops. No, sir. For other crops, you use that, the crop will be corrupt. Yes, that will be That much high concentration. it is a high amount. So other crops how much percentage, sir? 75 ml. 75 ml for per actually 5 ml per liter, sir. 5 ml per 5 ml per liter cow urine and 5 ml per liter buttermilk can also have a fungicidal property. If you keep a buttermilk in a copper pot, vessel. copper vessel for a night, then after you can use as a fungicide. Or example, some cucurbits, they are mainly affected by the downy mildew. So as a preventive we can use. Actually, in this organic farming, curative methods we are not getting any promising results. Only prophylactic only we have to Only. You have to use it before. If you got Before this, and continuously if we you have to observe any symptoms, you As old as buttermilk is better for controlling the fungal disease. 5 ml per liter. 5 ml. So for groundnut 10 ml per liter. Yes. It is already recommended by Junagadh Agriculture University. They are also working. Is there any information brochure with you like this all spraying concentration? Actually, we have uploaded on our website. Sir. 100 ml, sir. You have put 100 ml per liter. Sir, all the crops. 100 ml. Sir, all the crops. 9 ml. You have to maintain this package of practices. 10% like that. This much of FOM, this much of Jivamrita. You have maintained. We have maintained. Actually, we have uploaded that information. We have not any physical material. We are preparing one book. You are already uploaded. Uploaded on the Your website. Yes. Can we search for it? Yes. This is available. These are the different second crops. We are using same mulch paper, different crops. What is this, sir? Organic only. Company from Actually, we are very troubled with because of this company. They make it to Swamiji and force us to do that.
We have to take it first. Our organic farming is not depend on other markets. Actually, he is the founder member of this Lakpati Kheti. Means Lakpati Kheti means minimum 1 lakh net income per acre. So he will explain there what is the concept of this Lakpati. ये एक मॉडल है 1 एकड़ पे, एक इंच ज़्यादा नहीं 1 इंच कमी नहीं, बराबर 1 एकड़ पे 2013 से चल रहा है। ये कंसेप्ट क्यों बनाया? स्वामी जी के जो फॉलोअर्स है, बहुत से फॉलोअर्स रोज़ आते हैं, मुझे कैंसर हुआ है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ये है वो है, तो उसके ऊपर स्वामी जी ने अंत में ऐसा ध्यान दिया कि कैंसर का इलाज अस्पताल नहीं, आप खाना खाते हो उसमें जहर है, वो नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सावयव में यील्ड ज़्यादा नहीं आता, तो किसान सावयव की तरफ जा नहीं रहा है। तो अपनी 1 एकड़ ही भूमि में सब कुछ यानी आपके रसोई घर में जो लगता है वो, जब तक आपके आँख के सामने सावयव डाल के उगाया नहीं जाता तब तक दुनिया का कोई भी मटेरियल सावयव नहीं होता। ये उनकी डेफिनेशन है। तुम ज़्यादा पैसे दे के लाओगे ज़्यादा जहर आएगा। इसीलिए 3 सीज़न में, हर सीज़न को हम 100 से ज़्यादा क्रॉप लगाते हैं। 3 सीज़न में करीबन 188 क्रॉप होते हैं और 188 क्रॉप में से आपके रसोई घर की कोई भी ज़रूरत अधूरी नहीं रहती, पूरी होती है। और हम जो अगले पीढ़ी को सब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, तो उनको कैंसर ना हो, उनको डायबिटीज़ ना हो, ये है पहला कंसेप्ट। यानी कि लाख से ज़्यादा, करोड़ों से ज़्यादा ये हमारा परिवार है, वो पहला ये दुर्धर आजार से बचना चाहिए, ये मेन कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है टोटली मिक्स क्रॉपिंग है, इसीलिए यहाँ रोग कीट का कोई प्रादुर्भाव नहीं आता। बाकी विधि सब आप साइंटिस्ट ने जो दी है वैसे मैं करता हूँ। मैं भी नत्र यानी कि यूरिया इस्तेमाल करता हूँ लेकिन जैविक यूरिया, DAP इस्तेमाल करता हूँ लेकिन जैविक DAP, पोटैश इस्तेमाल करता हूँ जैविक पोटैश, और उनके 60 फार्मूला दिए स्वामी जी ने। रिजल्ट ओरिएंटेड यानी हमारी 3 क्रॉप रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारी पैडी 9.5 फीट टॉल, 242 टिलर्स एंड ग्रेन ईच ईयर 512, 3 कैरेक्टर गिनीज बुक रिकॉर्ड है। गन्ना हम 27 फीट तक गए। तो ये मेन क्रॉप के बीच में हम सब्जियां यानी पत्ती वाली सब्जियां लेते हैं, तो खरपतवार की थोड़ी समस्या होती है, लेकिन वो इंटरकल्टिवेशन भी हो जाता है। और 5 परिवार में जो 5 सदस्य है उनके लिए खाली 3 चीज़ें बाहर से लाने को परमिशन दी है, एक नमक, माचिस और कपड़ा, बाकी सब यहाँ से लेने का। यहाँ गैस लगाई है 6 घनमीटर की, 25 लोगों के लिए काफ़ी होती है। ये गाय रखते हैं हमने इधर मॉडल की 6 क्यूबिक मीटर। ऊपर ये है सोलर पैनल यानी बिजली मुफ्त, गैस मुफ्त, और पेट में बिगर जहरीला सब यहाँ से। बीज हमारा, खाद हमारा। देखो बॉर्डर पे आपको श्रीगंध यानी कि चंदन के 110 पौधे लगाए, 5-10 बरस के बाद उनके करोड़ रुपए हो जाएंगे। और बाकी सब चीज़ें जो खाने की है, यानी कि हमने तय किया कि 1 बरस में चावल कितने लगते हैं, गेहूँ कितना लगता है, चना कितना लगता है, उसी हिसाब से यहाँ प्लांटेशन छोटे छोटे प्लॉट है। ये मॉडल है बस। अभी क्या है, आप थोड़ा सा और 15 दिन आगे आते हैं, क्या एक सीज़न ख़त्म हो रहा है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आप आ रहे हैं, तो बहुत से प्लॉट खाली दिखेंगे आपको, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे जाने की इजाज़त है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं आपकी परमिशन ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी शिकायत स्वामी जी के पास जाएगी तो मैं घर जाऊँगा। थाना जी छोड़ के गया बीच में, तो जरूरत हो तो मैं रुकता हूँ, नहीं तो स्वामी जी का ही काम है, उधर जा रहा हूँ। आता का बघायचं ते बघतो आम्ही, आम्हाला लक्षात आलं ना बाकी सांगतो। हां जे सिंपल जे करताय ते तुम्हीच घेतले, ते चुकून
ಏನು ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆಮೋ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಸರ್ ಇವ್ರು ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಸರ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಐತೆ all spices, but nobody was सर सर यहाँ पे स्ट्रॉबेरी नहीं आता लेकिन कोशिश कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी आता है सर बರ್ತದೆ ಸರ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ It's coming up well because it is too hot now. ಹಿಂಗೆ ರಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೌದಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಸರ್ ಇದು ಏನಂತಾರ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಗಿರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಸರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ವಿಜಯಪುರ ಜೋಳ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಾಳು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗೂಸ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೂಸ್ ನೆಕ್ ನೋಡಿ ಲೋಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಟ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜೋಳ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ पूरा हार्वेस्टिंग हो गया है हार्वेस्टेड ಈಗ ರವಿ total natural. No any mulching paper wire using and no any that microbial pesticides and total natural. Sugar cane 5 ಅದು ಬಿಡಿ ಬಸ್ ಗಣಸ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಗಣಸ ಸರ್ ತೋರ್ಸ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇದು ಗೆಣಸು ಬಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಗಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಭತ್ತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇದೇ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಜೋಳ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳಕೋದ್ರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್
ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ fulfill your family needs and then whatever the extra you can. आप पीछे जो गन्ना देख रहे हो ये टोटली ऑर्गेनिक है और ये इसका थर्ड यानी कि पहले लावन हम बोलते हैं मराठी में, उसके बाद खोड़वा, अब ये ओ निर्वा है। इसको हमने खाली जीवामृत, गोकृपा अमृत और जो हमारे जैविक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश और माइक्रोन्यूट्रन जैविक में दिए। बाजू में दिख रहा है गन्ना वो दूसरे किसान का है और उन्होंने पूरी रसायन डाले हैं उसमें। अगर कंपेरेटिवली देखें तो उसका भी यील्ड उतना है और हमारा भी वो यील्ड उतना ही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लागत खर्चा हमें बहुत कम आया है, उसको बहुत ज़्यादा आया है। तो आज के ज़माने में स्वामी जी हमें ये सिखा रहे हैं कि कम से कम लागत खर्चे में अगर ज़्यादा यील्ड आया तो ही खेती फ़ायदेमंद होती है, अन्यथा मार्केट आपके हाथ में नहीं, कीट रोग आपके हाथ में नहीं, लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में है कि कम से कम लागत पर यील्ड ज़्यादा लाओगे तो बागवानी खेती फ़ायदे होती। और ये प्लॉट ऐसे ही क्या है, पूरी तरह हमने घर में इसके जो निविष्ठा लगते हैं यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, माइक्रोन्यूट्रन सब घर में बना के इसको छोड़े। इसके अलावा जीवामृत, गोकृपा अमृत भी छोड़ा है और वो पानी के साथ छोड़ा है, उसके लिए एक्स्ट्रा लेबर भी यूज़ नहीं किया है। ಏನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2002ರಿಂದಲೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅವರು ನಾವು ಇದೊಂದು ORP ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರೇನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ 10 ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಏನು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಅದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಟೈಪು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಯೋಜನೆ ಥರ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 2019ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು 5 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈಗ ನಾವೇನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೈತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನೇನು ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ಬೆಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಳವಡಿಸೋದು ಒಂದು ಉಪಚಾರ, ಎರಡನೇದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಲಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 2000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 2000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಾಗಿ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ? ಆ 2000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಏನು ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದೇ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೈತನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳೇನಿದೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಆಗಬೇಕು. ಊರಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜ್, ಒಂದು 3-4 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ ರೈತರಿಗೆ, ಆ ಕ್ಲಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 50 ಜನ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಝೋನಿಂದ 2000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂತೇಳಿ 10 ಝೋನಿಂದ 20,000 ಹೆಕ್ಟೇರು
20,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50,000 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಪರಿಕರಗಳು. ಅದು ಏನೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಜೀವಾಮೃತ ಇರಲಿ, ಬೀಜಾಮೃತ ಇರಲಿ, ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅವರಿಗೆ ರೈತರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ರೈತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ 4 ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 4ರಲ್ಲೂ ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಫಲಿತಾಂಶನೂ ಬಂದಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ನಾವು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 0.6, 0.7, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 0.8ವರೆಗೂ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅದು 0.8 ಇರೋ ಕಡೆ 1 ದಾಟಿದೆ, 0.6 ಇರೋ ಕಡೆ ಒಂದು 0.2 ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಎಂಜೈಮ್ ಕಿಣ್ವಗಳ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. ಬರ್ಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳುಗಳ ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಳುವರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೂ. ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ 1-2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ 10 ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಗೆ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮಿಲೆಟ್ಸ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳೇನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಯಾರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇರದೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸಲ್ಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಇಳುವರಿನೇ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಅಂಥ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದು ಭೂಮಿ? ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತೂ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ 25 ಟನ್ಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ 80 ಟನ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಕಬ್ಬು. ಈಗ 25 ಟನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿ 25ರಿಂದ 40 ಟನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಷ್ಟು ಜನ 50 ಟನ್ನು 60 ಟನ್ನು 80 ಟನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ 25ರಿಂದ 40 ಟನ್ ದಾಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕೆಡಲಿಕ್ಕೇನು ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಡಲಿಕ್ಕೇನು ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಡಿಕೆ ತೋಟದವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಂಗಿನ ತೋಟದವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಒಣ ಬೇಸಾಯದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರೋನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು ಬೆಳೆಯವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೈಯಿಂದಾನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಿವಾರ್ಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭೂಮಿನ ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೀಳಿಗೆಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣೇ ನೀರು ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಣ್ಣು ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಇವೇನು ಒಂದು 10 ಡ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು, ಆದರೆ 100 ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀರು 600 ಫೀಟು 800 ಫೀಟು ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇನು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ 40 ಫೀಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ತುಂಬೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ. 40 ಫೀಟ್ ನೀರು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಆಮ್ಯಾಗಿನ್ನ 800 ಫೀಟು 1000 ಫೀಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕು. ಈ 800 ಫೀಟ್ನು ಏನು ಭಾಳ ದಿವಸ ಏನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಭಾಳ ಆದರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀರು ತೀರೋಗುತ್ತೆ. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾತಾವರಣದ ಅಸಂತುಲನ ಏನಿದೆ ಅದು 2033 ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು 50-55 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋರಾಗ? ಅದು ಇದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇವತ್ತೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಕಟಾವಿಗೆ समय आंध्र तेलंगाना से देखिए आप लोग सुन रहे होंगे, तो देखिए अब आने वाले कई सालों में ये बता रहा था कि हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर 600 फीट पे पानी है नीचे, और कहीं जगह जाएंगे तो 800 फीट है, 1000 फीट नीचे पानी चली गई. इसका पानी तो भरना चाहिए नीचे. अभी भी ना इसमें कोई किसान इंटरेस्ट दिखा रहा है ना गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिखा रही है. ये ऐसे ही चलती जाएगी तो अब जो पानी है 1000 फीट के नीचे वो भी करीब 2030 तक करीब समाप्त हो जाएगी. जो बाद में आएगा वो पानी सब आर्सेनिक होगा, ना फसल का काम आएगा, ना हमारा काम आएगा, ना किसी पशु पक्षियों का काम आएगा. फिर अब ये 40 फुट हम जहाँ खड़े इसे भरने के लिए 100 साल लगेंगे. 40 फीट तक वाटर लेवल आने के लिए. हाँ, तो ये 2030 तक ये साइंटिस्ट लोगों की जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट लोग हैं उनकी कहना है कि हम 2030 तक कुछ रिपेयरी नहीं करेंगे तो ये रिपेयरेबल है, बाद में कोई रिपेयरी नहीं कर सकते, इसको कुछ भी नहीं कर सकते. तो 2030 के बाद तो क्या हो सकता है? कौन सी प्राणियाँ बच सकती है, कौन से आदमी तो कहीं भी बचेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है. वो एसी रूम बना के उसमें रहेगा, जैसे आज अरब देशों में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, वैसे ये बच जाएगा. आदमी को कुछ नहीं होगा, थोड़ा होगा, बाल बिल झड़ जाएंगे इसको छोड़ के, और कुछ नहीं होगा. मगर भैंस नहीं रहेगी, बैल मर जाएंगे, पंछियाँ कौवा छोड़ दिया तो बाकी कोई नहीं रहेंगे. तो जिसके करीब 4 फीट के नीचे रूट्स जिस पेड़ के वही रहेंगे. 4 फीट तक जिनकी रूट्स है वो सब मर जाएंगे, क्योंकि करीब 4 फीट तक ये बंजर हो जाएगा, ये करीब रेती बन जाएगी. तो इसको रिपेयर कैसे करेंगे? इसकी चिंता शायद ना किसान को है ना सरकार को भी ये चिंता सता रही है. अभी आज का दिन कैसा चला जाए इतना ही सोच रहे लोग, सब लोग यही सोचते हैं कि चलो आज का दिन और ये सीज़न कैसा निकल जाएगा और पैसा कैसा मिल जाएगा. भविष्य के लिए भी चिंता करने की ज़रूरत है. हमारी अगली पीढ़ी छोड़ दीजिए, हमारी पीढ़ी के लिए आगे कुछ करने की ज़रूरत है. तो उसके लिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ दिया तो दूसरा कोई सोल्यूशन है ही नहीं है.
इसको सीरियसली जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले रहे हम लोग। हमारा किसान, और किसान बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए। तो आज पैसा मिलेगा मगर कल क्या मिलेगा? किसान कुछ भी हो मुझे पैसा चाहिए बोलता है, और वो जहर भी डाल के उगाना चाहता है। तो फिर वो मिट्टी कितनी सहन करेगी? मिट्टी में इतनी सारी जीव सृष्टि है, वो सब खत्म हो जाएगी तो कल काम करने के लिए बचेंगे कौन? हम सलाइन लगा के पेशेंट को उठा के बिठाते हैं, वो सलाइन का असर खत्म होते ही फिर उसको एक दूसरा लगाना पड़ता है। वैसे हमारी मिट्टी की अवस्था हो जाएगी। कुछ डोज देंगे तो उठ के खड़ी होगी, वो डोज खत्म होते ही गिर जाएगी। इस पेशेंट को आईसीयू में आप कितने दिन जिंदा रखेंगे? आहिस्ते आहिस्ते मिट्टी आईसीयू में जा रही है। तो इसको आप लोगों ने सोचा, कुछ योजना बनाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बातें साइंटिस्ट करने लगी हैं। पहले तो मैं 25 साल पहले ये बात हम करते थे ना, बहुत सारे साइंटिस्ट वो महाराज पागल है बोलते, उनके दिमाग ठीक नहीं है, दुनिया कहाँ जा रहे हैं, महाराज क्या बोल रहे हैं, दुनिया आगे जा रहे चंद्र पर, ये महाराज जी पहाड़ पे जा रहे हैं, ऐसे कहते थे। तो हम जैसे जब बात करते थे तब लोग कहते थे, मगर आज सभी को कुछ एहसास हो रहा है कि नहीं, सच में मिट्टी की सेहत खराब हुई है। खराब तो इतना हुई है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं जहाँ वहाँ देखता हूँ, जाता हूँ, पूरा देश भर में ये स्थिति है। मगर कई राज्य बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है जहाँ आदिवासी इलाका है। वहाँ पर आदिवासी लोग कम से कम 20-25 गाय घर में रखे हैं आज भी। गांव के बाहर जाएंगे तो कंपोस्ट की ये इतनी दिखेंगे आपको, गांव छोड़ के 1-1 किलोमीटर तक दिखेंगे चारों ओर। बाय डिफ़ॉल्ट नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। अब ये 4-5 साल में 1% से हम 2% तक आए हैं। मगर दुर्दैव ये है कि 2% ज़मीन पे हम उगा रहे हैं, खाने वालों की, ऑर्गेनिक खाने वालों की परसेंटेज 1% है, 99 एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, 99% एक्सपोर्ट होता है, 1% केवल हम भारतीय लोग खाते हैं। तो इसको बहुत गति से बदलने की ज़रूरत है। अब नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट है, हम देखते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट है वो, क्योंकि उनको एक बोरी लेके अपने गांव जाने के लिए 5,000-10,000 खर्चा आता है, इसीलिए वो नहीं लेता, जो है वो उसी से करता है। ऐसे जो भी ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना, वो बहुत बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। उसके बाद कर्नाटक से बेहतर आंध्रा है ना? तेलंगाना कर्नाटक से बेहतर है, क्योंकि बहुत सीरियसली ली सरकार ने उधर, उन्होंने अच्छी की। तो हम थोड़ा सा प्रोग्रेसिव स्टेट जो है ना पहले वाले, उनके जहन में उतरने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वो अभी भी राह देख रहे हैं क्या होने वाला है। मगर अच्छी हुई कि आप लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं। अब साइंटिस्ट लोग बात करने लगेंगे तो लोग सुनेंगे जल्दी। ಏನಾದ್ರು